A big hello to you all. You are in for a treat. This is a very exciting, very exciting event because, as I will explain later, we have representation for underrepresented communities here today. And for the first time, maybe it's that they're performing in front of an audience or even just sharing their poetry in public. So can we just also all agree, though, that the energy of this festival has been something incredibly special? We are here just to create space and share space. And for the past couple of days, we have felt that, at least for me. So first, I would like to introduce Pomegranate Workshop. So they are the reason why this event even exists today. They are an arts education company and provide an enormous set of opportunities for the underrepresented communities, like performing at the literature festival like Lit Live. What makes this special is that we have with us today women, youth, and representation from the trans community too, and to be able to have this event that celebrates all walks of life and all experiences, and again, for the first time for many of them. I am here on behalf of Word Travels, a poetry organisation in Australia, and they started a partnership with Pomegranate back in 2017. So this project is funded by the Maitri Foundation and the Australian Department of Foreign Affairs and Trade. So, for a bit of context of this event, the performers that you will see have had a total of 3 workshops, meaning 3 hours of online Zoom workshops. Like, there is only so much energy and excitement that you can provide through a Zoom thing where everything is just chest up, right? And they have had that for 3 hours while me and 2 other Australian artists have been delivering them internationally. And so with those 3 hours then came the selection day, where we had a larger number of people perform in all 3 groups, and we have specifically selected the people you will see today. And then we had one last workshop in person, which happened a couple of days ago, to just hone the craft. But really what you are seeing is hours and hours of self-reflection and self-editing, writing, and determination. We are only here as the, mentors, but we are not doing the work. They are doing the work, and they are putting in the hard work and persistence to be able to create something for you today. So what you will see is significant growth in a very short amount of time. And I will reiterate this. This is the first time they're performing in such a context like this. It is nerve-wracking, but also exciting for them. And to perform their poetry for the first time, perhaps ever, and I will say that again, ever. So a big round of applause for everyone who you will see. I am so excited to share our first performer for the day. Her name is Tahura Mula, and she has always had an interest in writing, and it was actually during COVID that she experimented more and discovered a love for poetry. She's written a fiction book, but it's not published, so maybe someone get on it. And it's the first time she's ever sharing her poetry with anyone. So welcoming to the stage, Tahura Mula performing Phoenix. Okay, hello everyone. Hello. Oh my God, I was hoping for a louder hello. So let's just do that once more, okay? Hello everyone. Hello. Oh wow, amazing. Okay, everyone. So I am Tahura Mula, and today I am going to share a small write-up of mine for the first time. And the name of the write-up is Phoenix. Just like a phoenix, I too want to rise from the ashes. And here it goes. Life can be unfair, but I am a warrior. One last breath to take, not for me, but for her. Those with power are strong and rest remain weak, but I am a warrior. How can external authorities make me fear? I am burning and they think it's the shine, but I am a warrior. I am like the ocean with mysteries buried deeper. Tears
are for the weak, but I am a warrior. I'll cry, but won't stop, for I am the weaker. In the world of roaring swords, all I am is a pen, but I am a warrior. The fear in me died, and all that's left is a leader. Now, I know life is unfair, but I am a warrior. One last breath to take, not for me, but her. Power can never decide my abilities, but I am a warrior. No sky is forever blue, they say. Well, but what if I am the painter? Silence may be powerful, but the voice within has its own rights, but I am a warrior. Strong and mature. Oh, for once, can I be neither? Talking won't work now, but I am a warrior. I have to do this, for I am the reaper. Yes, in the world of roaring swords, all I am is a pen, but with the power to stop the swords, but I am a warrior. The fear in me died, and all that's left is the leader, and all that's left is the leader. Thank you. Yeah. Welcoming to the stage next, we have Nirjala Sharma. Nirjala is currently a university student, and when she listens to poetry, she thinks a small piece can explain just so much about a person and their experiences. She's never written poetry prior to the Pomegranate Workshops, so 2 months ago. So what a journey in such a short amount of time. Welcoming to the stage Nirjala Sharma performing her poem, Reminisced. Hello everyone. Do you guys also miss those special dishes made by your mother? Like you stay away from your family, you miss the festivals that we used to celebrate together, but you can't. I feel the same because I can put myself into your shoes. Exactly. So this is what I'm going to put. My poem name is Reminisced. So here it goes. The life was beautiful when we saw our mother, with love, give more. 2 chapatis when one was the call. Her hands held comfort, a taste we adore. But now, educated us seek flavors anew. And the warmth of a food feels lost in the brew. Life was beautiful when we could chirp, joyfully woven in laughter and cheer. But now, we seek solace in silence's murmur. Longing for peace, yet missing the near. Life was beautiful over then. We seek for calmness in the depth of our plea. Life was beautiful when we knew so little. The world was vast, yet our hearts felt light. Now burdened by knowledge, we struggle, we fumble, in choosing to ignore what once felt so right. The guilt shadows our vision, the truths that we see. And now, living with the weight that was never meant to be. Life was beautiful when we saw our parents. We adored them. In the labs, we found healing and grace. But now, we look at them with concerns as time leaves its print. Worried for them, also with the decision that we also make. The warmth of their love. In the warmth of their love, we once found our way. And now, we ponder the cost of the day. Thank you.
Again, never wrote poetry prior to Pomegranate. So, Pomegranate, shout out, and also shout out to Nijala. Thank you. Next up, Shraddha Mishra. She's in her last year before graduation. So she used to express feelings only in writing and didn't show people what she felt inside. She has written for about 7 to 8 years, but this is her first time performing. So this, again, Shraddha Mishra performing her poem, Rules and Regulations. सबको मेरा नमस्कार। आज मैं जो पोएम बोलने जा रही हूँ वो एक बहुत कॉमन पोएम है जो हम अपने घर में देखते हैं। एक्चुअली हमें यहाँ पे लगभग वुमेन्स दिख रहे हैं। ओके, तो ये जो हस्बैंड्स और वाइफ के बीच में जो कंपैरिजन होती है ना कि मैं बड़ा कि तू बड़ा, मैंने उस पर एक पोएम लिखा है। ओके, चलो आज बात कुछ यूँ कर लें, अपने अपने दायरों का हिसाब कर लें। तेरे हिस्से में कितना तू आता है, मेरे हिस्से में कितना मैं, चलो आज ये बात भी साफ कर लें। तेरे हिस्से में जवाब ही क्यों, मेरे हिस्से में सवाल ही क्यों, तेरे हिस्से में कहना ही क्यों, मेरे हिस्से में पूछना ही क्यों। तेरे हिस्से में पूरी मर्जी तेरी, मेरे हिस्से में सिर्फ तेरी इजाज़त ही क्यों। तुम्हें नहीं लगता ये जायज़ नहीं, तेरे हिस्से में सिर्फ तू, मेरे हिस्से में पूरी मैं भी नहीं। क्यों ना ये दोहरे रिश्ते का धूल साफ कर लें, अपने अपने दायरों का हिसाब कर लें। सवाल ये है कि मुझे जीने के लिए तेरी इजाज़त की ज़रूरत ही क्यों है। हर रोज़ तेरे हाँ या ना के बीच घुटने की ज़रूरत क्यों है। ये सारे बोझ, ये सारे कायदे मेरे ही हिस्से में क्यों हैं। ये सारे कायदे, ये सारे बोझ मेरे हिस्से में क्यों हैं। मेरा हिस्सा तेरे तमदिल इजाज़त का मोहताज क्यों है। तू भी मेरी इजाज़त का बोझ उठाने मजबूर क्यों नहीं। सवाल बहुत हैं, पर असली सवाल तो यही है ना, मेरे हिस्से में जवाब और तेरे हिस्से में सवाल क्यों नहीं। चल आज हिस्से बदल कर इंसाफ कर लें, अपने अपने दायरों का हिसाब कर लें। जितना हक मुझ पे तेरा है, उतना ही हक तुझ पे मेरा है। फिर ये दोहरे रिश्ते ने हमें क्यों घेरा है। तू जो चाहता है वो मैं करूं, तेरे लिए मैं सबको छोड़ दूं। तेरी दुनिया में सिर्फ तू, तेरी दुनिया में सब है, लेकिन मेरी दुनिया में सिर्फ तू ही क्यों। क्या मुझे हक नहीं अपनी दुनिया अपने तरीके से बनाने का। चल आज हक बराबर कर ले, अपने अपने दायरों का हिसाब कर ले। थैंक यू। Right. Again, first, I have to reiterate this every time. First time performing, it's you should see behind. There's nerves. There's and to just center and ground, because this is such a special moment for everyone to be here and to be so honest and to share stories like this. This is incredible. So, a big round of applause. Thank you. Okay, we're going to bring some beats in. Our next performer is Sagina Sheikh, and she started writing 1 year ago and accompanies her poems with rap and music. She loves how poems are relatable and can connect us when we're lonely. Second time performing, first time performing rap, we have Sagina Sheikh performing a poem, O Life. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सगीना शेख है। हेलो बोलो। मेरा नाम सगीना शेख है और आज मैं आप लोग को एक छोटा सा रैप सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है ए ज़िंदगी। सो स्टार्ट। दिखावट सी हो रही है, असल जिंदगी भी बनावट सी हो रही है। पहले ऐसी नहीं थी जैसी हूँ आजकल मैं, मेरी कहानी भी कहावत सी हो रही है। उलझनों में फंसी हूँ लेकिन हिम्मत मेरी कम नहीं, फिर से खड़ी हो जाऊंगी, ये तो आदत है मेरी सही।
नहीं फिर से खड़ी हो जाऊंगी, ये तो आदत है मेरी सही, फिर से खड़ी हो जाऊंगी, ये तो आदत है मेरी सही। ये भी जैसे मुझसे रूठ जा रही है, सफर एक कदम अब टूट जा रहा है, पिछड़े हुए ख्वाब की बात न कर, मेरे जिंदगी अभी तो सफर न कर, उलझनों में फंसी हूँ लेकिन हिम्मत मेरी कम नहीं, फिर से खड़ी हो जाऊंगी, ये तो आदत है मेरी सही, ये तो आदत है मेरी सही। अब मेरी पैर सो नहीं पा रही, खुशियों की चाहत में हो नहीं पा रही, अपने ही सांस डरता है अब जिंदगी तेरे रंग से पा रही, उलझनों में फंसी हूँ लेकिन हिम्मत मेरी कम नहीं, फिर से खड़ी हो जाऊंगी, ये तो आदत है मेरी सही, फिर से खड़ी हो जाऊंगी, ये तो आदत है मेरी सही, ये तो आदत है मेरी सही। Yeah, or just like a little head nod. Yeah, you're a bit cool like that. Up to our next performer, a very, very special performance. We have Shima Farhin. Shima Farhin is an Urdu writer and has published a book of poetry already called Rushde Kamal and published that last year. She uses poetry to convey truth and hope and motivation and to raise voice for women. So Shima Farhin performing Ab Kahani Likumabi Sansar Ki. हेलो एवरीवन, मेरा नाम शीमा फरहीन है। आज मैं एक गज़ल पेश करने जा रही हूँ जिसका उन्वान है औरत। औरत एक 4 महीने की बच्ची भी हो सकती है और यह औरत एक 70 साल लेडी की स्टोरी भी हो सकती है। मैं शुरू करती हूँ। अब कहानी लिखूँ मैं भी संसार की, अब कहानी लिखूँ मैं भी संसार की, या तो अपनों की मैं या तो अग़यार की। अब कहानी लिखूँ मैं भी संसार की, या तो अपनों की मैं या तो अग़यार की। जीत की मैं लिखूँ या लिखूँ हार की, या तो बीमार की या लिखूँ प्यार की। इफ़्फ़तें अस्मतें अब कहाँ रह गईं, इफ़्फ़तें अस्मतें अब कहाँ रह गईं। बनती हूँ रोज़ उन्वान अखबार की, दास्तां दास्तां उल्फ़तों की न लिखे कोई, दास्तां उल्फ़तों की न लिखे कोई। अब मैं जब चुन गई पीछे दीवार की। शुक्रिया। बेड़ियाँ बेड़ियाँ पैर में मेरे डालोगे क्या, बेड़ियाँ पैर में मेरे डालोगे क्या। जंग जीतूंगी मैं बिन ही हथियार की। बेड़ियाँ पैर में मेरे डालोगे क्या, जंग जीतूंगी मैं बिन ही हथियार की। उम्र की अब कोई भी है सरहद नहीं, उम्र की अब कोई भी है सरहद नहीं। वो हरासा है, वो हरासा है उसने न इकरार की। मैं तो पाबंद हूँ रीत और रस्म की, मैं तो पाबंद हूँ रीत और रस्म की। क्या ज़रूरत मुझे होगी दीवार की, मैं तो पाबंद हूँ रीत और रस्म की। क्या ज़रूरत मुझे होगी दीवार की। उसके किरदार पर उंगली आ जाएगी, उसके किरदार पर उंगली आ जाएगी। जो न औरत हो मर्द तेरे मेयार की। आओ सब औरतें, आओ सब औरतें अपनी आवाज़ लें, आओ सब औरतें अपनी आवाज़ लें। ये कहानी न हो अब की इस बार की। शीमा शीमा एहसास की एक तहरीर है, शीमा एहसास की एक तहरीर है। ये गज़ल जो भी मैंने है तैयार की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। Well, we were talking about diversity in poems, in stories and experiences. We're not lying. Next up, we have Anshika Gaud. Anshika is currently a student and started writing poetry last year. She loves writing poems that motivate, but also that observe human life and its experiences. She's performed once before and is excited to share her story today.
Anshika Gaud, performing her poem, Responsibilities. हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंशिका है और मैंने जो पोएम लिखी है वो माँ बाप के ऊपर है। जैसे कि माँ बाप हमें पाल पोस के बड़े करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उनको अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। वृद्धाश्रम, सॉरी। पोइट्री का नाम है जिम्मेदारियाँ। हैं कुछ जिम्मेदारियाँ लेके वो सिर पे उठाते, दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद की खुशी ना जाने कहाँ छोड़ाते। सुबह घर से बाहर निकलते, फिर रात को घर पे है आते। इतनी कड़ी मेहनत के बाद कुछ पैसे घर पे हैं लाते। हम पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहकर उन्हें समझ नहीं पाते। पता नहीं कैसे वो हमारी एक झलक देखकर सब कुछ समझ जाते। ना जाने वो इतने मजबूत है कैसे, वो भी तो इंसान है ना। क्या उनको भगवान ने पत्थर का दिल बना के भेजा है, जो हर किसी के ताने सुन के ले लेते हैं, फिर भी वो चुप रहते हैं। क्या पूरी दुनिया की जिम्मेदारियां उसे कंधे पर ठहरी है पत्थर के जैसे। न जाने वो इतनी तकलीफ़ें झेलते हैं कैसे। पूरी उम्र निकल जाती है दूसरों को खुश रखने में और ज़रूरतें पूरी करने में, फिर भी हम कहते हैं किया क्या है आपने हमारे लिए। ना जाने वो इतनी तकलीफ़ें झेलते हैं कैसे। क्या यही दुनिया का सच है, इतना कुछ होने के बाद भी वो नहीं रोते, हमेशा हंसते रहते हैं। क्या यही है एक आदमी की असलियत, क्या यही है उनकी पूरी ज़िंदगी की कहानी। थैंक यू। Observations and truth. So we're hearing a lot of that today. Next up, we have Kalpish, a trans man working in the NGO Tweet Foundation, which is a transgender welfare equity empowerment trust. And through poetry, he wants to express his identity and fight for equality and rights of his community. Kalpish performing My Struggle, Just Like Karna. नमस्ते सभी को। मैं एक ट्रांसमैन हूँ और मैं हमेशा अपने किरदार को कर्ण के किरदार से एक सिमिलरिटी देखता हूँ। हमेशा जब फैमिली में भी रहता हूँ तो महाभारत के जो बाकी किरदार है उसमें मैं मेरे फैमिली को देखता हूँ। आइडेंटिटी के हिसाब से मुझे जो अधिकार या फिर जो राइट्स मिलने चाहिए, हमेशा मुझे आइडेंटिटी शो करनी पड़ती है। मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ। राखी बांधनी है तो मुझे शो करना पड़ता है कि यार तू जन्म से मेल नहीं है। जैसे कर्ण को बोला जाता है कि तू जन्म से ये नहीं है, वो नहीं है, बट तेरे में सामर्थ्य है, बट आइडेंटिटी नहीं है तेरे पास, तो तेरे को ये सारे राइट्स या जो चीज़ें तुझे चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, वो नहीं मिलता। तो मैं हमेशा उसमें अपने आप को देखता हूँ। तो वो देख के मैंने अपने किरदार को भी इस कविता में साझा किया है। तो मैं भी कर्ण हूँ, संघर्ष मेरा साथी है, समाज की नज़रें चाहे मुझे ठुकराती है। जैसे कर्ण ने संघर्ष से अपनी राह बनाई है, वैसे मेरे भी अपने अस्तित्व की लड़ाई है। कर्ण की तरह छीने गए मेरे भी अधिकार, ना संपत्ति का हक, ना रिश्तों में प्यार। सिर्फ कर्ण का नहीं था, मेरा भी ये हाल है। हर पहचान के साथ संघर्ष और हर रिश्ते में मलाल है। उसने हर अपमान को अपनी शक्ति बनाया, उसने हर अपमान को अपनी शक्ति बनाया। मैंने भी हर तिरस्कार को अपना हौसला बताया। वो माँ थी जिसने उसे छोड़ दिया, मुझे भी समाज ने अपने साँचे से दूर किया। जैसे मैं हमेशा, अभी शुरुआत में भी मैंने बोला कि रक्षाबंधन या फिर कोई भी त्यौहार है मेरे लिए बहुत एक दुख लेके आता है, क्योंकि मुझे शो करना पड़ता है। एक सवाल होता है कि तुम कौन हो। रक्षाबंधन, दिवाली, भाई दूज, हर रीति में मैं भी हूँ सवालों से घिरा, जैसे कुछ अधूरा सा समाज की दृष्टि में। मेरा सच सदा से किनारा किया, कर्म से तो हूँ पूरा, बट जन्म से और धर्म से अधूरा माना गया। अधूरा नहीं हूँ मैं, अधूरा नहीं हूँ मैं, ये तो समाज का भ्रम है। मेरी आत्मा में ताकत और कर्म में दम है। आखिर में ये सबसे एक सवाल है कि ये कैसा न्याय है। कर्ण का सामर्थ्य हर चुनौतियों को पार कर सकता है, पर सबका सामर्थ्य जो वाह होती है वो सिर्फ अर्जुन को ही क्यों मिलती है। एक और जिसे हर तरफ से समर्थन मिला हुआ मेरा भाई, एक और मैं अकेला संघर्ष करता हुआ जो हर शक्ति मैंने खुद है पाई, फिर भी क्यों नहीं मिलती मुझे समानता की परछाई। क्यों मैं जो हर मोड़ पे साबित हुआ, क्यों नहीं मिलता मुझे वो मान।
बस इसलिए कि मैं जन्म से नहीं हूँ बेटा, लेकिन मेरे सामर्थ्य और संघर्ष में तो है असली जान, लेकिन मेरे संघर्ष और सामर्थ्य में तो है असली जान। धन्यवाद। मैंने जो अभी फीलिंग्स बताई थी कि मैं हमेशा राखी को मिस करता हूँ, तो मेरी एक ये पोएम सुन के हमारी जो परफॉर्मर है श्रद्धा, शी वांट टू टाई राखी। और मैं ये मेरी सगी बहनों को दिखाऊंगा। वैसे मेरी 4 बहनें हैं, उसमें से मैं धीरे धीरे ऐसा ही टॉर्चर कर करके उनको मैं समझाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो 2 बहनों ने बांधी है, 2 बहनें और बाकी है। ये 5वीं। ये हक है इनका। थैंक यू, थैंक यू। So for the audience who wasn't sure what that symbol was, that gesture, I need to double check. I don't want to get it wrong. Okay, cool. It's to show the bond between a brother and a sister, this gesture. So can we... That was so beautiful. Next up, we have Apaiksha Jatav, who started writing in 5th grade and now is in 10th grade to express herself, and connected with how poetry can connect humans through the complexities of our life experiences. It is her first time performing, Apaiksha Jatav performing her poem, We Rise. Hello, I'm Apeksha, and today I'm going to recite a poem which is rather a reflection on a lesson that my mom taught me as a toddler. I was a child, running free. Falls? Oh, they came. They always do. Scrapes, bruises, pain. And then her arms, steady, safe, sound. She said, every time you fall, you grow. Don't despair. Don't despair. So I didn't. In her words, I found a seed buried deep. It was me. But oh, seeds? They grow, they rise, stronger with every push, they reach the stars. So now I rise, I fall, I rise. And life, it squeezes, it tests, it breaks. But each squeeze, each fall is a lesson, a strength in disguise. We rise like seeds breaking free from the soil. We rise even when life tries to bury. Why? Because we are seeds. Seeds grow, we rise again and again. With every fall, I move closer, closer to something bigger, to something deeper, to something that calls to us, to something that calls to me, to reach, to dream, to rise. Thank you. Can you believe we only have 2 more performers? Oh, that just means Pomegranate needs to do more of these events, huh? Ha 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 ha. Second last performer, Shraddha Matal, a Marathi woman who started writing at 16 and is performing her work in Marathi. Despite differences in language, she believes there's no barriers because poetry transcends it, and wants audience to connect not by the words but by the feeling. Shraddha Matal performing her poem, Precious Memories. नमस्कार मुंबईकर. आता तुम्हा सर्वांना आपल्या आयुष्यात एक तरी आठवण अशी असेलच जी आठवली की चेहऱ्यावर सुंदर हास्य उमलतं आणि मनातसुद्धा वेगळ्या भावना तयार होतात. तर अशीच तुमच्या आठवणीतील अनमोल आठवण तुमच्या सर्वांसमोर सादर करते. गुंतवुनी पापण्यांना तिथे, गुंतवुनी पापण्यांना तिथे मी स्वप्न पाहत राहिले. गुंतवुनी पापण्यांना तिथे मी स्वप्न पाहत राहिले. भान विसरुनी जगाचे मन माझे अलगद वाहिले. उमजेना मलाच माझे कशी त्यात रंगले. उमजेना मलाच माझे कशी त्यात रंगले.
सूर सारे सापडलेले आज पुन्हा हरवले. किती वेळ किती प्रहर असेच निघून गेले. किती वेळ किती प्रहर असेच निघून गेले. अबोल करुणी मनास स्पंदने बोलके झाले. तरीही ना संपला हा खेळ लहरी. तरीही ना संपला हा खेळ लहरी. कळी उमलली ती सुंदर लाजरी. कळी उमलली ती सुंदर लाजरी. आठवणींच्या तिजोरीतील ती अनमोल आठवण आहे. आठवणींच्या तिजोरीतील ती अनमोल आठवण आहे. आज पुन्हा पुन्हा ती मला साद घालते आहे. आज पुन्हा पुन्हा ती मला साद घालते आहे. धन्यवाद. Ay, ay, ay. Oh, okay. Up to our last, but very not least, performer, we have Faiza Azmi. Faiza has a profound love for books, and this is no exaggeration. We were just talking before. I learnt that she needs to read at night, otherwise she can't sleep. She likens her relationship to writing as mother and daughter. Through her poetry, she discusses governmental issues and women's issues to bring voice from her community. Welcoming to the stage Faiza Azmi, performing her poem, From Me. सभी को मेरा आदाब. मैं फ़ाइज़ा आज़मी पेश कर रही हूँ एक नज़म खुद से खुद तक, जिसमें मैंने खुद से सवाल किया है, खुद को हौसला दिया है और खुद को एक ताकत और एक वादा दिया है. तो पेश खिदमत है. खुद को आज़माया बहुत, खुद को रुलाया बहुत, खुद को हराया बहुत, एक औरत को एक औरत से. बाप की इज़्ज़त बनी, भाई की गैरत बनी, माँ का आंचल बनी, शौहर की जीनत बनी. मैं कहाँ, मेरा वजूद कहाँ. यहाँ भी खुद को गवाया, हर ज़र्रे में मेरा ज़िक्र आया, तारीख़ में अपना मकाम पाया, खुद को जद्दोजहद की रानी मनवाया. हर कहानी है मेरे बिना अधूरी, है हर कहानी मेरे बिना अधूरी, पर मैं कहाँ, मेरा वजूद कहाँ. बस अब सपनों की दुनिया सजानी है, अब अपनी ज़िंदगी खुद बनानी है, अब हक की आवाज़ उठानी है, अब बात अपनी मनवानी है. क्योंकि मैं हूँ, मेरा वजूद है. खुद को मनवाना है अब, खुद को हंसाना है अब, खुद को जिताना है अब, एक औरत को एक औरत से. शुक्रिया. A huge round of applause for everyone who has performed today. So before we bring them to stage and have an opportunity to chat, to discuss, if you want to interact and ask questions, we do have the opportunity to. From hearing their poems and from hearing everything in this festival and the energy and the love that comes from the words and the experiences, I would like to perform something today that I haven't performed actually ever with an audience. It is a love poem for my Asian heritage, and I feel very nostalgic coming to Mumbai, given the fact I have never been to Mumbai, but its energy and its level of excitement and movement reminds me a lot of China, where my parents are from. And what I've realized is that there are very similar love languages, with not perhaps saying I love you, but showing that through a dish that they've made, or a gesture, or something that is unsaid but means just as much, if not more than an I love you. So this is my poem called Not a Mind Reader. I'm no mind reader, but I know I love you tastes like day-long simmering rich marinades dressing meat in a shiny soy gown, warming up the bellies of houses like winter, smells wrapping bodies in woolen jumpers embroidered in spice.
I love you is staring at our bare legs and arms and criticizing and warning and warning and warning of sickness, of stuffed joints, for too soon for a young person like us, of flu, of eventual death until we seed and cover skin. I love yous are wrapped in glad wrap. The triple bag, freezer-packed chunks of meat to prepare your favorite meal 30 weeks down the track. They are surface-level questions of minutia. What you have been doing, how work is going, wrung out like a worn rag, but somehow always has some life left in them. I love you looks like filling dinner bowls until overflowing while theirs sit empty. I love you sounds like you barely have eaten anything as I'm comatose, legs and arms splayed out, wondering if we really just sat at the same table or if they're challenging me to an early death. I love you is never accepting a compliment and saying, if you like it, that's all that matters. I love you are empty seats at the dinner table, tales of shinku. Hard work means sacrifice, means child eating alone. I love you is never doubting if they'll be there for you. It's savage criticism only your 6th grade bully could dare say. I love yous are always about food. Hunger is honest. We're just trying to find ways to tell the truth. I love yous are the soft cushion of a full stomach. They are silent dinners with nothing but a thank you at the end. I am no mind reader, but I know I am loved by you. Thank you. Welcoming back to the stage everyone who has performed. A huge round of applause. So this is the time to hear from our performers, and if you have questions or just have a comment perhaps, please do share. They are ready to answer, they are ready to connect, so... Or pictures first. Yes. Could I give a prompt? Is that okay? Prompt for the next poem. Oh, challenging, sure. There's a word called Qurratul Ain. Does anybody know it? It's an Arabic word for coolness of eyes. That's how the Prophet... Oh, sorry. Should I start again? So there's a word called Qurratul Ain, which means coolness of eyes. It's a word that was used by Prophet Muhammad to describe namaz, I guess. So if you could write a poem where you could give instances of what is Qurratul Ain to each of you, I think I would love to hear that and get to know you more. Yeah, thank you. Wow. Do we have a mic? Do we have a mic here? भी कर सकते क्या पूछो जी उन्होंने क्या पूछा ट्रांसलेट भी करना Yes, for someone who asked the question? Down there. Yeah. On no, sorry. The first question? Asked the question. Yes. You. It's because we're going to translate the question for the. Oh, yes. So तो then मैं they हिंदी can में बोल सकती हूँ. हिंदी में बोलो? Please go ahead. Yeah. अच्छा तो फिर से ओके. कुरतुल ऐन एक शब्द है जो एक हदीत में यूज़ हुआ था टू नमाज को एक्सप्लेन करने के. एक मोमिन के लिए नमाज कुरतुल ऐन जैसी होती है, आंखों की ठंडक. तो आपके लिए क्या क्या आंखों की ठंडक है? आपके लिए अपनी लाइफ में आप क्या देखते हो और आपको ऐसा फील होता है कि ये है तो लाइफ है, और उसका एक लिस्ट ये है. अगर आपको चाहिए तो आप इस पर एक कविता लिख सकते हैं और हमको सुनने अच्छा लगेगा क्योंकि हमको आपको और अच्छे से हम आपको जान सकते हैं फिर उससे. थैंक यू. Thank you. Oh, you got a question? Not a question, but a comment. My name's Rob. I'm the Australian Poetry Slam champion.
but I just want to say thank you for some of the most beautiful poetry that I've heard in quite some time. Brave, honest, and powerful. So thank you. आपका क्वेश्चन है ऑडियंस के लिए, आप भी पूछ सकते हैं ऑडियंस को. कोई क्वेश्चन है उनके लिए? I have a question. Yeah. Oh, did you want to say something? मेरा रैप थोड़ा सा फास्ट था तो आई होप कि आप लोग को समझा होगा. आपके पीछे लिरिक्स फास्ट होना चाहिए, नॉट फास्ट. फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस. बहुत बढ़िया. यहाँ वतन के शायकीन कितने हैं, क्या मैं जान सकती हूँ? बहुत ही बढ़िया गजल किया, बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत मैच्योरिटी लिखी हुई और आंखों में आंसू आ गए आपकी गजल सुनते सुनते. बहुत दिल को छू गई आपकी गजल. बहुत बढ़िया. और एक गजल सुना सकते हो क्या आप में से कोई भी? और for your age, बहुत ही like for your age it was beautiful. मतलब बहुत समझ थी उसमें, बहुत profound था, बहुत खूबसूरत. I loved it. अगर आप लोग और भी इसी तरह के वर्क में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी बुक रोशदाई कामिल अमेज़ॉन पर है, आप लोग पढ़ सकते हैं. जी बिल्कुल. I was just going to ask a question. So you started this journey in September doing the online workshops, and here you are now. I guess it's two questions. What was the biggest challenge? And is this presentation today what you thought it was going to be when you started at the beginning? Okay, can everyone hear me? Yes. Okay, so firstly, like I have said before, I am very new to this. Okay, so I write poems. I do write them, but performing is something that I'm doing for the first time. So performing was a very big challenge for me. Firstly, second, slam poetry. I have written before, but something like this I'm writing for the first time, with the help of the Pomegranate team, of course. So the whole workshop, the whole session was a milestone for me, because something new that I tried, and I entered into a very completely different and a new world. But this today, something that I did was what I never imagined that I'd be doing. I just came here and saw everyone, and all those smiling faces gave me so much confidence, and I just went for it. So thank you so much. So even this was my first time I wrote my own poem. So it's very normal that a poem is something that you want everyone to understand what you're writing in just few words. So that was a challenge for me, that what I'm writing, it should reach out to people, like my feeling should also be understood by the people. So when I wrote, it was the first time I was like, will people get what I'm coming from, where I'm coming from? Will they really get it? Like, that was the one challenge. But yeah, of course, when we were rehearsing, when we were trying, and when we got feedback, it was like making sense. The way I hear others and get inspired by their poems, maybe sometime I can reach my voice to them and they might get inspired. So yeah. तो मुझे ये चैलेंजेस हुआ कि मुझे एक कंपेयर करना था, जो भी एक बहुत ही पौराणिक एक काव्य ग्रंथ है, महाभारत है, अपने आप को उसके साथ कंपेयर करना, या फिर कोई चीज़ मेरे से ऊपर नीचे कही गई, कोई शब्द गलती से उसमें बताया गया, तो मेरे लिए एक चैलेंजिंग था कि शायद वो एक इतने बड़े काव्य ग्रंथ के ऊपर कुछ खुद को कंपेयर करना, और ऊपर से ट्रांस लोगों को ऑलरेडी एक
ठीक है आप सेंसिटाइज्ड हो, आपको पता है, बट जो मेन स्ट्रीम है जिनको नहीं पता है, बट उन्होंने बोला कि अरे तू ट्रांसजेंडर है, तूने ऐसे कैसे कंपेयर किया, महाभारत कैसे यूज़ किया, उसमें कर्णा से खुद को कैसे कंपेयर किया, वो महायोद्धा है। तो वो बड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग था और डर सा था। तो ऊपर से एक वो महाभारत है, तो कर्णा के लाइफ से मेरे खुद को कंपेयर करते करते मैं लिखूँगा तो वो 4-5 पन्नों का हो गया था। तो थोड़ा करते करते 2 पेज पे आ गया, 4-4 लाइनें थी, 2-2 लाइनें की। और ऊपर से एक बैकग्राउंड बताना जिनको नहीं पता है, क्योंकि इंडिया के बाहर के भी है जिनको महाभारत नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है, तो उसका बैकग्राउंड भी पता होना थोड़ा बहुत वो भी था। बट हो गया, जो हमारा वर्कशॉप हुआ उसमें हमको इनकरेज किया गया, जो मन में है वो बोलो। और एक कविता ऐसी थी कि मैंने एट द एंड वर्कशॉप होते होते ऐसा प्रेजेंट किया कि ये खाली कर्ण की स्टोरी नहीं है, एक आइडेंटिटी है। चाहे वो कर्ण की आइडेंटिटी हो, एक महिला की आइडेंटिटी हो या कास्ट की आइडेंटिटी हो, आप कर्म से उसको कंपेयर करो, कर्म के हिसाब से उसको राइट दो, ना कि आपकी बाय बर्थ क्या है। So, Hello. Hello. so I'm so sorry to do this. Yes, I'm very sorry. I don't like doing this to cut people off. We have an event starting soon, and because of that, we need to wrap up Q&A, unfortunately. However, Q&A never ends. So that's what lobbies are for. So we will bring it to the lobby. If you have questions for our artists today, please do chat with them. And if they are still lingering around for the rest of the day, please do catch them and have a chat with them. They have so much to offer, as you have seen. So a huge round of applause to them again, please.